What an amazing day in the Indian stock market. Now today 16,000 was not just broken, it was taken out brutally. It was completely taken over by the bulls and the bears were completely astonished by the move. We saw such a huge short covering rally today and Nifty opened with a small gap up today 15,900 950 के जोन में कंसोलिडेट करने के बाद 16,000 आया और 16,000 के स्मॉल कंसोलिडेशन के बाद इट वाज अ कंप्लीट वन वे upside move in Nifty today. It was clearly a day of the option buyers, but as I have told you, we sold good put options. I told you in yesterday's analysis video, we have sold good put options and we actually made good money at the Millionaire Trader Club. It was a great day at the TMT community. So Nifty closed the day 245 points up with so much strength and Nifty closed at 16,130 levels. Now what I can feel is that 16,000 का जो लेवल है 15,950 से 16,000 का जो जोन है वो पहले एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था पर अब बहुत अच्छा सपोर्ट होगा. बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी 35,000 के जोन के आसपास थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद completely it broke out of the zone and Bank Nifty closed at 35,207, that is 500 points up, and Bank Nifty again showed some strength, and the main contributing factor is definitely the results that are soon going to be announced by SBI tomorrow, right? So basically with the power of SBI and major other banks, Bank Nifty shot up and it contributed well into the Nifty, right? And if we see all other indices, definitely Nifty FMCG shot up 1.73%, Nifty Financial Services shot up 1.68%, Nifty Auto shot up 1.56%, Nifty Pharma shot up 1.19%, and Nifty IT shot up 1.18%. So it was only Nifty Media, if I can see here, Nifty Media is the only sector that closed in negative, that too not much, and Nifty Metals closed kind of on a positively flat note, right? So Nifty Media closed down 0.8%, and if we look at the Asian markets were mostly trading mixed since morning today, and all the other European markets are all trading well in green, right? So HDFC, we need to talk about HDFC. HDFC declared results that were a little bit below the estimates, but उसके बाद भी HDFC 3.7% up जाके close हुआ है, and that was the power, that was the strength in HDFC today. And if we talk about a few other gainers, then Titan was there that closed 3.8% up, and SBI definitely gained 2.6%. So that is something definitely to be seen. And Infosys, I shared the levels with the TMT Club members during the day for Infosys, and Infosys has been selected by the Union Bank of Philippines for finance digital banking solutions, and Infosys closed 1.45% up. It was a great day over there as well. And if we talk about IndusInd Bank also shot up to close 3.45% up, and it was mainly because the RBI has selected it as an agency bank for government related transactions, right? So that is something that happened with IndusInd Bank today. And other than that, we have a few more things to discuss. So auto sector was in general bullish today, and if you look at other ancillary stocks of auto sector, let's talk about Minda Industries, Bharat Forge, or JK Tyre, Tata Motors, all closed up very well in positive today. The top 5 gainers for the index were Titan, HDFC, IndusInd Bank, Nestle India and SBI, right? ये पांचों टॉप गेनर्स थे, और टॉप लूजर्स में आज बहुत ही कम स्टॉक्स अवेलेबल हैं. ओनली JSW Steel, Bajaj Auto, Shree Siemens, Tata Steel, NTPC and UPL are the only 6 stocks that came into the losing sector. Rest all the stocks closed into the green sector today. So in general अगर देखा जाए तो निफ्टी में बहुत हेवी बुलिशनेस थी आज, और आज डेफिनेटली ऑप्शन बायर्स के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग दिन था, राइट? सो अभी की स्थिति को देखते हुए, इस समय जो सिचुएशन है इंडेक्स के अंदर, उसको देखते हुए वी कैन क्लियरली सी दैट 16,000 is going to be a decent support level and 35,000 is going to be a decent support level in Bank Nifty as well, right? Now what happened today? आज मेनली जो हमको देखने को मिला वो ये था कि सिस्टम के अंदर इतने ज्यादा जो शॉर्ट्स क्रिएटेड थे एट 15,900, 15,950, 16,000, 16,050 लेवल्स,
they had to run for their covers, right? Basically, what does this mean, right? If they want to save their position, they have to exit from their position. And when the short sellers, the call sellers, when they'll exit from the position, they'll basically buy into the markets, right? And this adds fuel to the market. This even propels the market further upwards. That is what we saw today. It was a great 240 250 point move in Nifty today. Amazing day. And we had a great day at Millionaire Trader Club as well. We shared good trading ideas. मैं आपको अभी कुछ देर में दिखाऊंगा डिस्कॉर्ड पे आज हमारा ओवरऑल कैसा रहा मिलियनेयर ट्रेडर क्लब पे हमारा पूरा आज का सेशन. इट वाज ग्रेट एंड ऑल्दो we can say that Nifty has got its strength back. Now, if the SBI results come out to be, pretty good, we might actually see Nifty moving further upwards towards 15,300, 15,350 levels. That is a possibility that we should not ignore, right? So, let me actually also tell you that, okay, before moving ahead, I want you to actually go and hit the subscribe button अगर आप नए हैं चैनल पे, ताकि आप डेली अमेजिंग कंटेंट जो आ रहा है जिसको देखने से आप अपने आप को एक बेहतर एक एम्पावर्ड ट्रेडिंग करियर की ओर ले जा सकेंगे. तो जरूर इस कंटेंट को देखने के लिए सब्सक्राइब करें रोडिंग बुल्स को और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी जरूर प्रेस कर दें सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी अपडेट्स. दीज अपडेट्स आर गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर यू, राइट? एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है जरूर इस चैनल को अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर करें. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड एनालाइज एवरीथिंग दैट हैपेंड इनटू द मार्केट्स टुडे ऑन द चार्ट्स एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द पोटेंशियल ट्रेडिंग लेवल्स फॉर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन. टुमारो इज वेडनेसडे. द रिजल्ट इज गोइंग टू कम फ्रॉम SBI and Thursday is very close, so it is going to be a great discussion today, right? So stay tuned till the very end of the video, my friend. You are watching Roaring Bulls, the stock market show. Okay, so just how beautiful it is to see such a huge rally in the Nifty 50 index. Let me actually switch it to 5-minute time frame and हम डिस्कस करते हैं कि ब्रेकआउट के बाद आज एक्चुअली हुआ क्या. देखिए, पहले हम एक काम करते हैं, इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेते हैं. 1 आवर टाइम फ्रेम पे स्विच करने के बाद वाओ, व्हाट अ ह्यूज ग्रीन कैंडल वी सी देयर. सो कैन यू सी निफ्टी वाज ट्रेडिंग इन अ वेरी स्मॉल रेंज, राइट? तकरीबन 1 जून के बाद से ही, फर्स्ट वीक ऑफ जून के बाद से एक बहुत स्मॉल रेंज के अंदर निफ्टी ट्रेड कर रहा था और ये रेंज ब्रेकआउट नहीं हो पा रही थी. बट टुडे इट वाज अ ह्यूज बुलिश मूव इन द इंडेक्स एंड 16,000 एक बार जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद निफ्टी के लिए सिर्फ ऊपर का रास्ता खुला था, नीचे देखने की शायद जरूरत ही नहीं थी. लुकिंग एट द 1 आवर कैंडल, इट्स अ प्योर वन वे अप मूव, राइट? देयर वाज जस्ट वन सिंगल आवर ऑफ कंसोलिडेशन. अगर आप यहां देखेंगे तो सिर्फ ये एक छोटी सी आपको 1 घंटे की कैंडल दिख रही है तकरीबन 1 से सवा बजे के आसपास की. व्हेन FIs एक्चुअली कम इनटू द मार्केट्स एंड स्टार्ट सेलिंग, इवन दे कुड नॉट sell so much that they could take Nifty down. So around 1 o'clock, 1:15, there was little bearishness for 1 hour and then it completely shot up from 16,000 levels to 16,120 levels during the day. Such was the bullishness. So great day in Nifty today, right? So लेट्स स्विच टू 5-minute टाइम फ्रेम एंड सी लेवल्स कितना ब्यूटीफुली वर्क करते हैं, ये आपके लिए समझना जरूरी है. देखिए, हम कई दिनों से इस लेवल की बात करते आ रहे हैं, राइट? इस पर्टिकुलर लेवल की बात करते आ रहे हैं दैट दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ गुड रेजिस्टेंस. अभी क्या हुआ, जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है विद स्ट्रेंथ, इट बिकम्स अ गुड सपोर्ट. सो व्हाट हैपेंड हियर, यू सी फर्स्ट 5-minute कैंडल यहां पे ओपन हुई, 15,950 पे डायरेक्टली रेजिस्टेंस फेस किया. ये लाइन हमारे पास पहले से ड्रॉन थी. दीज आर हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस. मार्क माई वर्ड्स, अगर आप अच्छा ट्रेड सेटअप बनाना चाहते हैं तो हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाना सीख लीजिए, बिकॉज दे हेल्प यू टू बिकम अ बेटर ट्रेडर, राइट? दे हेल्प यू टू टेक बेटर ट्रेडिंग डिसीजंस. एंड आफ्टर दैट इट वाज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ पुल बैक एंड अगेन सपोर्ट से वी कैन सी देयर इज अ गुड लॉन्ग विक कैंडल ओवर हियर एंड फ्रॉम दिस सपोर्ट the index started to fly back up. दिन का हाई तोड़ने के बाद, फर्स्ट 15 मिनट्स का, फर्स्ट 20-30 मिनट्स का हाई तोड़ने के बाद विद सच बुलिश स्ट्रेंथ, यहां पे आप देखेंगे थोड़ी देर होल्ड करने के बाद इट जस्ट slowly went up and killed the bears today, right? This is what happened in the index today. And as of now, I can definitely say that now fresh support now stands at this level. So I can basically do one thing. I can actually extend this zone of support now. This is going to be a good support. And let me remove these area of supports and resistance. So this is all taken out. So no need of drawing all these levels, right? So these are all taken out. We leave the levels as it is because just in case if the index comes down, we should know where it can actually take good support. So right now, let's actually draw a fresh resistance over here. So
the fresh resistance will come around at today's high, that is this thing, 16,150 levels is going to be the fresh resistance. अब कल क्या हो सकता है आपको एक consolidation दिखे 16,000 से 16,150 की रेंज में. That is a possibility if the markets are not supported by SBI very heavily, right? Look at Nifty futures, right? During the day, Nifty futures actually touched 15,162. That's a huge move, right? So Nifty की हमने बात कर ली है. Nifty के लिए कल इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग जोन मैंने आपको बता दिया है. देखिए एक बार हम यहाँ पे सेंट्रल पाइवट रेंज को भी चालू कर लेते हैं और देख लेते हैं. देखिए सेंट्रल पाइवट रेंज के हिसाब से अगर आप देखेंगे, सो इट वाज अ नैरो रेंज CPR टुडे एंड CPR बहुत नीचे कहीं रह गया. उसके बाद तो सिर्फ एक वन साइडेड अप मूव था. नाउ टुमारो वी आर गोइंग टू गेट अ वाइड रेंज CPR since we have got such a huge move, and wide range CPR also sometimes mean that the markets can consolidate around the CPR zone because already the movement has come. पिछले दिन बहुत ज्यादा मूवमेंट आ चुका है. So that's a key learning here, you know, learn this कि ऐसा हो सकता है अगर बहुत ज्यादा हेवी मोमेंटम आया है पिछले 1 या 2 दिन में, तो आपको थोड़ा कंसोलिडेशन दिख सकता है मार्केट के अंदर, राइट? सो लेट्स ऑल्सो लुक एट द ऑप्शन चेन ऑफ निफ्टी. Wow, such is the support. Can you see? Such is a great support in the option chain. 67 lakh open contracts on the put side for 16,000 level. That's a huge support. That's a huge support. And can you see there's such a huge short covering that happened today? So many option contracts on the call side are reduced. यहाँ पे आपको दिख रहा है कितने कम हो चुके हैं और जितने भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट हुए हैं वो ऊपर कहाँ तक शिफ्ट हो गए हैं? 16,500 तक जाके शिफ्ट हो गए हैं. सो there are multiple resistances ahead, but those resistances are not as good as these supports that are available on the downside. इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 16,000, 16,050 एक अच्छा सपोर्ट है और अगर 15,900 की बात करें तो वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा सपोर्ट है, राइट? ऊपर हम बात करें तो 16,300 पे एक अच्छा तगड़ा रेजिस्टेंस है इस समय. 16,200 पे भी बड़ा रेजिस्टेंस है. That's what I was saying on the charts कि 16,000 से 16,100 के बीच में आपको कुछ हद तक कंसोलिडेशन दिख सकता है. 16,150 16,100 के बीच में कुछ कंसोलिडेशन दिख सकता है आपको, राइट? सो नाउ एक्चुअली लुक एट द बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन एज वेल. बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में देखेंगे तो आपको दिखेगा 35,000 के लेवल पे एक इनडिसाइसिवनेस है अभी भी, ओके, बट सपोर्ट साइड is much strong. 16.4 lakh open contracts on the put side and 15 lakh open contracts on the call side जहां पे भी unwinding हुई है, right? So this means that 35,000 level is definitely a decent support now, but 35,000 के नीचे कहीं भी अगर आप देखेंगे तो 34,900, 34,800, 34,700 ये सभी बहुत अच्छे सपोर्ट जोन्स हैं and 35,500 is the next big resistance. अगर ये चला जाता है, if bulls take out this resistance, then we might actually see a good rally till 36,000 and this rally might be sponsored by SBI, right? Let's quickly also talk about max pain in Nifty. हम कई दिनों से डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी का मैक्स पेन जो है वो 15,900 15,800 के जोन में शिफ्ट होता रहता है. अभी मैक्स पेन शिफ्ट होकर 16,000 पे चला गया है. What this basically means, मैक्स पेन अगर शिफ्ट हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, then it means that basically the market is heading towards that zone. Market is heading in that direction. So let's see for 5th of August. Can you see from 9th of July till 5th of August, max pain has been gradually shifting on the upside. Can you see that? So most of the time max pain even actually went to 15,900 on 16th of July, but right now the max pain is standing at 16,000. मतलब क्या है इसका? अगर आप max pain के एनालिसिस करेंगे, max pain होता क्या है? Max pain is basically the point where the maximum pain is caused to an option buyer because the option at the max pain point will expire worthless. वो worthless expire हो जाएगा, right? So 15,000 अभी 15,800 से 15,900 शिफ्ट हुआ, अब 16,000 शिफ्ट हो गया है. 16,050 16,100 भी शिफ्ट हो सकता है. अगर ऐसा होता है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि मार्केट में हेवी बुलिशनेस है, राइट? सो दिस इज व्हाट आई फील, राइट? नाउ अगेन let's go back to our charts over here. Let's discuss bank nifty now. bank nifty में अगर हम देख रहे हैं तो बहुत क्लियरली ये दिख रहा है it was such a bullish move in bank nifty. थोड़ी देर हॉल्ट किया बैंक निफ्टी ने कहां पे, जो ये लेवल्स हमने कल डिस्कस किए थे. डू यू रिमेंबर दीज लेवल्स? हमने कल ही डिस्कस किए थे कि यहां एक रेजिस्टेंस है 34,000 के लेवल पे. हमने ये ट्रेंड लाइन कल ड्रॉ करी थी, एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन मैंने आपके साथ ड्रॉ करी थी एनालिसिस वीडियो में. वहां कहीं मार्केट ने थोड़ी देर हॉल्ट किया और इस ब्रेकआउट के बाद इट वाज अ प्योर वन साइडेड अप मूव इन द बैंक निफ्टी इंडेक्स एंड
35,000 बहुत furiously it was taken out. So now the next resistance, we already have those resistance marked on our charts, right? So no need to worry. Bank Nifty is still not at its all time high. हम इन resistances को सिर्फ extend कर लेते हैं ताकि हमको clarity के साथ हमारे levels पता रहें, right? So let's extend this resistance area and also let's extend this resistance area, right? So these are going to be your next resistance in Bank Nifty index and मार्क डाउन द सपोर्ट लेवल्स. ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है 35,100 की, ये आपके लिए एक डिसेंट सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी इंडेक्स में, राइट? सो यू कैन मार्क दीज लेवल्स ऑन योर चार्ट्स ऑन द 5 मिनट टाइम फ्रेम. 35,260, 35,280 is going to be the resistance area and 35,450 is going to be the next resistance area. Support, सबसे पहला सपोर्ट यहां पे अवेलेबल है बहुत इजीली और सेकंड सपोर्ट यहां पे है, इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं, राइट? दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सपोर्ट. अब हमारे पास सीपीआर को अगर हम देखेंगे तो सीपीआर भी एक नैरो रेंज सीपीआर था. That actually showed that it can be a good one-way move, right? So it happened. Support अगर हम देखेंगे तो 34,940 के आसपास सपोर्ट है और ये दो रेजिस्टेंस ऊपर अवेलेबल है, राइट? हमने ऑप्शन चेन ऑलरेडी स्टडी कर लिया है. So such was the day in the markets today. हमने आज ये भी एनालाइज कर लिया कि आज क्या हुआ मार्केट्स में और कल क्या होने के चांसेस हैं. Now, if you truly believe that you can make good money from the stock market, I would request you, I would urge you to start learning and start putting in efforts in the direction of empowered trading, right? Start learning option selling strategies, start learning how to stay disciplined during the market hours, start learning how to actually trail your profits in the right way, start learning how to manage your position size whether you're an option buyer or an option seller. ये सारी चीजें जब आप सीखना चालू कर देंगे, I can commit to you that stock market is one of the most important and the most amazing tool that has been given to the humankind in order to achieve financial freedom. But a lot of people don't use this tool in the right way. 95% of the retail traders don't use this tool in the right way. They use the stock market as a tool to get rich quick. And let me tell you, no one has ever gotten rich quick from stock market, right? It takes time, it takes patience, and not just time and patience, you need to have the right strategies in place. You need to know कि adjustment trades कैसे लेते हैं. You need to know कि market आज जिस तरीके से 250 पॉइंट ऊपर चढ़ा है, ऐसा हर रोज नहीं चढ़ता है, ऐसा हर रोज गिरता भी नहीं है. मार्केट 80% ऑफ द डेज साइडवेज रहता है. जब साइडवेज डेज रहते हैं तो आप कैसे पैसा बना सकते हैं? बहुत कंसिस्टेंटली साइडवेज डेज में पैसा बनता है if you know how to very well sell options using the right hedged positions. Hedged positions क्या होती हैं? For every option you sell, you need to have a buy, a buy position in place so that you hedge your position and you manage your risk. So we learn all of this at the Millionaire Trader Club. Definitely consider joining the Millionaire Trader Club. The link is in the description below. It is right now at a very discounted price and you are going to love the experience. बहुत मजा आएगा आपको. It's a community feeling of traders. It's a feeling of trading with fellow members that makes it so rich and so wonderful in experience. क्योंकि आप अकेले ट्रेड नहीं कर रहे होते हैं and everyone is there to help out each other on the TMT Club. So I hope you enjoyed this video. Definitely consider subscribing to the channel and TMT Club की लिंक डिस्क्रिप्शन में है. August बैच बहुत जल्द चालू होने वाला है. You are going to love the experience. So I hope you enjoyed the complete analysis video. Don't forget to hit that like button. Thank you for listening to me. This is from Utkarsh Bhargav. You are watching Roaring Bulls, the stock market show.